Happy International Youth Day. Today I'm sharing here some of the points which I feel are really important for the young doctors who are planning to pursue a medical studies. I'm Dr. Tahura Tajammul Hussain Sarguru. I'm MBBS MS General Surgeon. I've done my MRCS from the England and I'm practicing for now in Medford, Mumbai. According to my experience, I want to share few points. First is you have to be very clear with your goal. Like what exactly do you want to do? Second is choose your field, what you really like, what you feel will make you happy. Not just because your friends are doing or your parents are telling or because you saw somewhere on the YouTube or Instagram. So if you want to be a surgeon, you should definitely go for it. Or you want to practice medicine, so you should go for the MD medicine. You can be a dietitian, you go for that. You think you want to be a physiotherapist, so you should go for that. Don't just choose your field just because like no my friend did, इसने किया है मैं भी करूँगा, उसने किया है मैं भी करूँगा. ऐसे मत कीजिए. जो आपको अच्छा लगता है आप वो चूज कीजिए. Third will be believe in yourself. अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे या आप नहीं सोचोगे कि आप कर सकते हो तो वो तो हो ही नहीं सकता. It is impossible. तो पहला आपको ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. यहाँ पे मैं अपनी एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी. मैंने अपनी 10th तक की स्टडी उर्दू मीडियम से की है. उसके बाद में 11th 12th बहुत डिफिकल्ट गया मेरे लिए बिकॉज मुझे हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. मेरे को एक साइड में बुक और एक साइड में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था. तो वो 2-3 साल वर वेरी डिफिकल्ट. बट देन समहाउ आई डिड अ लॉट, आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट. आई यूज्ड टू राइट एवरी वर्ड्स मीनिंग इन हिंदी और उसकी वजह से अभी आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल, इंग्लिश एज वेल, उर्दू भी पढ़ सकती हूँ. दैट इज obviously has become the plus point. But the point here is like if you believe in yourself, you can achieve where you want to go. Like I wanted to be a surgeon and Alhamdulillah I have reached here. So I'm very happy about it. And the last I would like to share is like amount of work. It's always about the quality of the work over the quantity of the work. अब 10 पेशेंट देखोगे, हाँ क्या हुआ, तकलीफ है, हाँ ठीक है जाओ, दवा लिख दिया जाओ. So you should give the equal amount of time to all your patient and try to learn things from your patient because every patient will teach you something or other. ऐसे नहीं कि ये तो एक छोटा सा ही केस है, बस ये बुखार ही है, इससे क्या ही सीखने मिलेगा. हर पेशेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा. It's not always about your field. या ऐसे कुछ हो सकता है वो आपको कुछ personal experiences दे दे. Because in today's world also, patients see doctors after God. So we have to maintain that image and you should do everything best towards your patients and always like if you have reached this stand कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो definitely you should try to do a good for everybody.